Good evening, kids. We are going to discuss the 23rd January Shift 1 JEE Mains 2025 paper. The paper यहाँ पे पेपर लेंदी एंड टफ है. अगर यहाँ पे आपको अराउंड 50 या 50 अराउंड 55 मार्क्स मिले तो इट विल कम इजीली 99% है. कुछ डरने का जरूरत नहीं. जो भी ये पेपर दे चुके, पेपर इज लेंदी एंड डिफिकल्ट. तो आप आराम से बाकी JEE मेन सेकेंड या एडवांस प्रिपेयर स्टार्ट कर सकते हो, जिसका भी मार्क्स 50 से ज्यादा है, 99% है. एंड फॉर 100% आई एम नॉट श्योर, मे बी अराउंड 70 और 80 इट विल बी देयर लाइक दैट. एंड जो भी शिफ्ट 24 को लिख रहे, 24 नेक्स्ट अगेन बाद में 28, 29, हाँ एक क्वेश्चन कौन सा भी रिपीट नहीं हो रहा है. तो ओनली जस्ट एक बार देख लीजिए, बस एक क्वेश्चन सॉल्व करने का जरूरत नहीं, जस्ट एक बार देख लीजिए, दैट बी सफिशिएंट. बाकी जो भी कॉन्सेप्ट फॉर्मूलास आए उसको रिवाइज करें, दैट बी मोर एडवांटेज. कंप्लीट पेपर सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जस्ट यू शुड हैव ए ग्लैंस व्हाट लेवल दे आर आस्किंग, व्हाट दे आर आस्किंग, बिकॉज नन ऑफ द क्वेश्चंस आर रिपीटेड. अब तक जो भी शिफ्ट हो चुके चारों पेपर लगे 24 कुछ भी रिपीट नहीं होने वाला है, और 28, 29 को कुछ भी रिपीट नहीं होने वाला है. This is very important. Paper is tough, lengthy. No need to worry. Those who have got 40, 45 marks, no need to worry. Okay, I'll start the paper. Good evening, बच्चों. We are going to discuss the JEE Mains 2025, 23rd January, Shift 1. मैं आपका श्रीधर सर, फिजिक्स लेक्चरर. पेपर के बारे में, पेपर इज लेंदी एंड टफ. अगर यहाँ पे आपको अराउंड 50 to 55 मार्क्स, दिस विल बी फॉर 99% है ना. और मैंने सुना है कि इवन चेक्ड इट, मैथ्स भी लेंदी है. सो यहाँ पे थोड़ा आपका टोटल स्कोर बहुत कम होगा, एंड दैट विल बी सफिशिएंट फॉर 99%. आई थिंक दिस विल बी द टफेस्ट सेशन अब तक जो भी हो चुका है. दिस इज द टफेस्ट सेशन. 22, 23 में चारों पेपर में, चारों शिफ्ट में दिस इज द टफेस्ट शिफ्ट. देखेंगे कल 24 में क्या होगा और बाद में 28, 29 में. सो विल स्टार्ट विद द पेपर डिस्कशन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे पहला वाला क्वेश्चन, इन द गिवन डीसी सर्किट फाइंड द करंट थ्रू 12 ohm resistance at steady state. यहाँ पे steady state means at t equal to infinity. So जहाँ पे भी इंडक्टर है at steady state, it will behave like a short circuit. और जो भी बचता है सर्किट में ओनली वो रेजिस्टेंस, करंट I will flow. यहाँ पे 12 volt. So what is I is equal to 12 by R. और से लेके अप्लाइड हो EMF E by R. 12 by 12. So ये हुआ 1 ampere. Okay, this will be 1 ampere. So steady state means जहाँ पे भी इंडक्टर है उसको like you are going to replace with a short circuit. इसको हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं. At t equals 0, it will become open circuit. यहाँ पे क्वेश्चन at steady state पूछे, so that is at t equal to infinity. Very easy question. Like what is the name of chapter? Chapter का name है Electromagnetic induction RL circuit, growth and decay of RL circuit. अगला क्वेश्चन ले लेंगे. ये तो सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्ट. We have to calculate find the position of center of mass of uniform disk of radius with respect to previous origin if small disk of radius 5 centimeter is cut. ये जो डिस्क है इसमें से हम इसको ओल बना रहे हैं.
जब all होने के बाद what is the center of mass of the disk with all? ए वाला शेडेड वन, ए वाला ओ रहे, छेद बोलते हैं ना हिंदी में, हम जिसमें छेद बना रहे हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, लगे विल एज्यूम वन डिस्क विदाउट ओल, देन इसमें हम अनदर डिस्क ऑफ नेगेटिव डेंसिटी, इसका रेडियस कितना हुआ आर, ए वाला हम स्मॉल आर कर लेंगे, दिस इज द डिस्क विदाउट होल, और ए जो है दिस इज डिस्क विथ, इसका मास कितना है नो m1, इसका मास कितना है m2, इसका डेंसिटी होगा सिग्मा, इसका डेंसिटी होगा माइनस सिग्मा। इसका मास कितना m1, m1 मास फाइंड आउट करेंगे, m1 का मास हुआ सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, m2 का मास कितना है माइनस सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। सो फ्रॉम with respect to if the small disk, find the position of center of mass of with respect to this a वाला origin है ना, इसको हम डिफाइन करेंगे। सो अगर ये आप इस तरह ले लेंगे, दिस इज द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन, इसका m1 तो मास यहीं पे रहेगा और m2 का मास यहाँ पे है, सो रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस में हम ओल का डिस्टेंस कितना है, सेंटर ऑफ द ओल इज एट अ डिस्टेंस, सेंटर ऑफ द ओल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ हाउ मच 15 सेंटीमीटर। देन यहाँ पे हम m1 एंड m2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन व्हाट इज द फॉर्मूला, xcm इज इक्वल टू m1 इंटू 0, इसी को हम ऑरिजिन ले रहे हैं, द सेंटर ऑफ दिस इटसेल्फ इज ऑरिजिन, ए वाला ओल और ए डिस्क विदाउट ओल, नो द फॉर्मूला विल बी m2 इंटू 15 बाय m1 प्लस m2 माइनस m2 का वैल्यू कितना है सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर 15, m1 का वैल्यू सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे सिग्मा पाई एलिमिनेट हो जाएगा, 15 आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है 5 स्क्वायर, इसका वैल्यू 20 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, अगर इसको सॉल्व करेंगे विल गेट -1 सेंटीमीटर। प्रॉब्लम बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको याद रहना चाहिए, लेकिन सर इसका नेगेटिव नेगेटिव कहां से ले रहे, तो व्हाट इज m2 का वैल्यू इस तरह लिखते हैं हम, नेगेटिव डेंसिटी पाई आर स्क्वायर, मास विल बी नेगेटिव, ए वाला डिस्क विथ नेगेटिव डेंसिटी अगर यहाँ पे आप रख देंगे देन वो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल, अगला क्वेश्चन ले लेंगे, the ratio of electric force to gravity between two particles having q and mass respectively, रेशियो यहाँ पे दो पार्टिकल है, ए वाला हुआ पार्टिकल m1 m2, इसका चार्ज q1 एंड q2, separation is r, what is the electrostatic force Fe, a हुआ electrostatic force, this one will be gravitational force, तो ये तो कुलम्स लॉ एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स Fe by Fg, Fe का वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू विल बी Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ग्रेविटेशनल का फोर्स G m1 m2 बाय 4 पाई r स्क्वायर, ओनली r स्क्वायर, सो यहाँ पे Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट G m1 m2, ऑप्शन 4 दिस विल बी ओके। तो चैप्टर का नेम है ग्रेविटेशन, सिंपल ना, ये तो आई थिंक हर एक को पता होगा, लेकिन न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन है,
ये तो कुलम्स लॉ है। से इसलिए मैं बच्चों से लेके जो भी लिख रहे शिफ्ट 24 एंड नेक्स्ट 28 29, आप एक बार जितना होता है उतना पढ़ रिविजन कर लीजिए। देन सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लाइक नथिंग विल हेल्प यू। इससे पढ़ने से बहुत फायदा है। हाँ, सब कुछ भी नहीं है, like there's nothing called like a 50 important question, 100 important question, 200 important question, 500 important question। इससे बदले आप पढ़ लीजिए ना सर, कि ये तो सिंपल कुलम्स लॉ है, जस्ट देखिए। ये तो ग्रेविटेशन, इसके लिए आप नो नीड टू सॉल्व एनी पेपर, जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास थोड़ा याद रहे तो मैनेजेबल। प्लीज गिव प्रायोरिटी टू द लर्निंग। हाँ, जब तक आप पढ़ोगे नहीं आप सुधरोगे नहीं। दिस इज अ वेरी सिंपल गाइडेंस आई वांटेड टू गिव। जिसका भी 28 29, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी तुम लोगों को। जितना होता है उतना रिवाइज कर लो, नो नीड टू सॉल्व एनी पेपर। अगला क्वेश्चन, विच वन इज करेक्ट ऑप्शन फॉर गिवन सर्क्यूट। सो यहाँ पे सर्क्यूट ले लेंगे, सेल है, एमीटर, दो रेजिस्टर्स है, यहाँ पे एक डायोड दिया है और ये 4 ओम रेजिस्टर्स है। देन क्या क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, लाइक करंट, यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, इसका पोटेंशियल कितना है और इसका पोटेंशियल कितना है। देन दिस टॉपिक बिलोंग्स टू सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर फिजिक्स। यहाँ पे हम कितना वोल्टेज डाल चुके हैं, 6 वोल्ट। पहले हम एक काम करेंगे, देखिए ये फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है। V1 V2 सभी पूछ चुके हैं। तो देन इट विल बी सर्क्यूट, यहाँ पे ऐसे डाल लेंगे ये रजिस्टर। यहाँ पे जो डायोड है दिस विल बी फॉरवर्ड बायस्ड। अगर डायोड फॉरवर्ड बायस हो गए तो देन उसको हम शॉर्ट सर्क्यूट बोलते हैं, आइडियल डायोड। एंड ये रजिस्टर कितना, 4 ओम, 4 ओम, ये वाला 4 ओम, 6 वोल्ट है। 4 ओम 4 ओम पैरेलल 2 ओम, ये पे 4 ओम। सो यहाँ पे V1 V2 और एक सर्क्यूट बना लेंगे। सो दिस विल बी 4 ओम, ये 2 ओम, दिस 4 ओम। पोटेंशियल डिवाइडर अगर याद रहे तो टेक हेल्प ऑफ पोटेंशियल डिवाइडर, वरना राइटिंग लूप इक्वेशन से भी कर सकते हैं हम। नो, V1 का वैल्यू कितना, 6 इंटू 4/4 + 2, दिस विल बी 6 इंटू 4/6। इसका वैल्यू 4 वोल्ट। V2 का वैल्यू विल बी 2 वोल्ट। करंट यहाँ पे कितने फ्लो हो रहा है, I इज इक्वल टू 6/4 + 2, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट है, V2 2 वोल्ट है, V1 4 वोल्ट। यहाँ पे करंट, वोल्टेज एंड V1 V2। सो यहाँ पे ऑप्शंस हमें 1 एम्पियर करंट, V1 4 वोल्ट, 2 वोल्ट, ये वाला होगा ऑप्शंस। So, सर लगे अब इस डायोड, व्हाट वी आर डूइंग विद द डायोड, डायोड इज फॉरवर्ड बायस। जहाँ पे डायोड है उसको हम शॉर्ट सर्क्यूट बोल रहे हैं। सो व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ डायोड, यहाँ पे जो भी डायोड है इट इज फॉरवर्ड बायस्ड। एंड फॉरवर्ड बायस्ड डायोड क्या होता है कि फॉरवर्ड बायस्ड डायोड में इफ द डायोड इज फॉरवर्ड बायस वी कैन रिप्लेस दैट विद ए शॉर्ट सर्क्यूट। जहाँ पे डायोड था उसको हम शॉर्ट सर्क्यूट से रिप्लेस करते, फॉरवर्ड बायस डायोड, फॉरवर्ड बायस्ड एंड रिप्लेस्ड विद शॉर्ट सर्क्यूट। अगला क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड द क्वेश्चन इंडक्टेंस के बारे में पूछ रहे हैं। सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन,
What is the self inductance का formula है? Mu naught n square s by l. So coil एक सोलोनॉइड को ही हम एक टेक्निकल अलग एप्लीकेशन नाम दे रहे हैं, उस दैट इज कॉल्ड एज ए inductance. Self-inductance of a coil, actually the question should be like this, of a coil depends on. So what is small capital N number of turns? A over L, and this one will be R. यहाँ पे S means pi R square. And it also depends upon the medium. अगर यहाँ पे आप एक फेराइट रॉड रखेंगे, मैग्नेटिक मीडियम इंट्रोड्यूस करेंगे, देन सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू बढ़ जाएगा. इट विल बिकम म्यू नॉट म्यू आर n square s by l. Mu r will become relative permittivity of this ferrite rod. It will increase by mu r times. So यहाँ पे equations formula देख लो. This mu r depends on medium. ये जो yellow color, this is the medium. Ferrite rod, इसको हम ferrite rod बोलते हैं. Ferrite rod और medium. इसका मीडियम का इफेक्ट ए वाला क्वांटिटी लाइक इंपैक्ट करेगा. म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी बोलते हैं हम. देन नंबर ऑफ टर्न्स, ए सब तो ज्योमेट्री, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स, ज्योमेट्री, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्योमेट्री, लेंथ ज्योमेट्री. सो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, लेके सेल्फ इंडक्टेंस क्या कंक्लूड करेंगे? इट डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री एंड मीडियम प्रॉपर्टी. और क्या इंसर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, like a steel, ferrite, iron, magnetic, non-magnetic substance. Based on that, the mu r depends on this medium. So इसके property of medium बोलते हैं. Very simple. Again, once again, ये जो भी पूछ रहे हैं, this also based on the definition. अगला क्वेश्चन दे देंगे. The circuit shown in the circuit is closed at t equals 0. Choose the incorrect option. At t equals 0, पूछ रहे. So then at t equals 0, what is the state of this one? यहाँ पे हम सर्किट बना लेंगे. ये वाला कैपेसिटर, स्विच को हम क्लोज कर रहे हैं. देन जहां पे भी कैपेसिटर है, इट विल बिकम शॉर्ट सर्क्यूट. दिस इज द कैपेसिटर. ये जो कैपेसिटर था ना, उसको हम विल रिप्लेस एट t equals 0, इट विल बिकम शॉर्ट सर्क्यूट. एंड द करंट जो फ्लो होता है ना, उसको I naught equal to how much will be E by R. यहाँ जो कैपेसिटर वोल्टेज है, what is the voltage? Will be 0. यहाँ जो current flow है, this is maximum. And the equation for current at any time, this is the equation. And voltage का equation इस तरह आता है. So choose incorrect options बोल रहे हैं. Current in the circuit is 0. No, current in the circuit is maximum. Voltage across capacitor is minimum at t equals 0. Current in the circuit is maximum. ये वाला हुआ correct. Voltage across resistance is maximum. This is correct. Current in the voltage across capacitor is minimum. Current in the circuit is 0. Current in the circuit तो ये तो okay. Voltage across the capacitor is minimum. 0 को minimum नहीं बोल सकते ना. This is also correct. Huh? Current in the circuit is 0. No, it's a non-zero, so this is a wrong option.
Okay, this will be your wrong option. Wrong option के बारे में पूछ रहे हैं, incorrect. This concept क्या है? Like a RC circuit, resistor. So ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, resistor, capacitor, RC circuit, growth and decay of charge across the capacitor. अगर ये सब formulas हैं, and this is also based on simple formula. अगला क्वेश्चन ले लेंगे. If two dipoles moment are placed action, find the net electric force which feels by the point unit charge at point P. यहाँ पे एक चार्ज है. Then what is the net force experienced by it? यहाँ पे दो डाइपोल है. What is the field produced by the dipole 1? Dipole 1 तो field ए वाला तो डाइपोल है. It will produce field in this direction, and a first dipole will produce field in this direction. So what is the basic idea? यहाँ पे idea is problem is like this. Simple circuit बना देता हूँ. ये जो डाइपोल है P is a dipole 1. A dipole 2. This will produce field in this direction. Because इसके लिए dipole 2 के लिए ये जो a line है ना, this will become axis. On the axis, what is the electric field in the direction of dipole? और dipole 1 के लिए ये वाला होगा bisector. और point charge किधर है? On the bisector. On the bisector of dipole field will be opposite to dipole moment. E1 इस तरफ होगा. So ये वाला E1. यहाँ पे हमें point charge है. सेम दोनों का डाइपोल मोमेंट. सो E2 नेट फील्ड यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे. दिस विल बी E2 माइनस E1. E2 का वैल्यू 2kp r cube. This will be kp r cube. Resultant will be kp r cube. Then the force कितना हुआ? Q. यहाँ पे पॉइंट चार्ज यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर चुके हैं हम. सो व्हाट इज द नेट फील्ड? जहाँ पे पॉइंट चार्ज है वहां पे नेट फील्ड कितना है? E. दैट उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं. सो इक्वल टू Q इंटू kp बाय r cube. Find the net electric force which feels a point unit charge. यूनिट चार्ज का वैल्यू कितना है? Q इक्वल टू 1. सो कितना हुआ ना? kp बाय r cube. दिस विल बी योर ऑप्शन. हाँ, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट सर? लिखे ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, electric dipole based on it. So problem ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट. अगर आपको थ्योरी में पकड़ है तो देन दिस पेपर इज वेरी इजियर. आप बिना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जो भी करते हो, वेस्ट ऑफ टाइम. Then ito thermodynamics, the concept, the problem is based on thermodynamics. Adiabatic constant of gas is 3/2. If volume of gas initially at 0 degrees is reduced to 1/4 of the original volume, the new temperature is 0 degree. Means initially what is the temperature? Is 0 ka temperature initially will be 273 Kelvin. नया temperature में at what temperature the volume reduces to 1/4 of the original. Initial volume कितना है? V0. Now this will become V0 by 4. V1 का initial volume V0. अब इसका final volume कितना होगा? V0 by 4.
is reduced to 1/4 of the original volume. इसका न्यू टेम्परेचर पूछ रहे हैं. So then directly T1 V1 gamma minus 1 equal to T2 V2 gamma minus 1. T1 273, इसका वॉल्यूम V0. एक काम करेंगे हम, इस तरह इक्वेशन पहले सिंप्लीफाई करेंगे. T1 V2 का वॉल्यूम कितना, V1 का वॉल्यूम V1, V2 विल बी V0 by 4, गामा विल बी 3/2 minus 1. T1 का वैल्यू कितना है, 273. 273 4 to the power of 1/2. तो T2 का वैल्यू कितना होगा ना, 273 by 2 minus 1. Okay, this 1/2. 273 into 2. तो ये हो गया 546 केल्विन. दिस इज ऑप्शन. आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए. अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो फाइन, फिर वेरी इजी. एडियाबैटिक प्रोसेस, P1 V1 P1 V1 गामा इक्वल टू P2 V2 गामा, देन T1 V1 गामा माइनस 1 इक्वल T2 V2 गामा माइनस 1. अगर ये आपको ये सारे फॉर्मूला से याद रहे तो यू कैन मैनेज दिस क्वेश्चन. बिना ये फॉर्मूले यहाँ पे हाईली इम्पॉसिबल टू सॉल्व. जस्ट बेसिक थ्योरी आपका टीचर नोट से एक बार निकाल के पढ़ लो, बस रिवाइज कर लो एक बार कंप्लीट, जितना होता है उतना. अगला क्वेश्चन ले लेंगे. This thermodynamics very important. The basic process, polytropic process, isothermal, adiabatic, isobaric, isochoric, then polytropic process. उसका जो formulas है, just read once, will be easy for you. Next one, if given a convex lens of refractance in a liquid of refractance given, having radius of curvature R1, R2, and R2 surface silver variation of the plane of so that real and neutron is formed at the same place. यहाँ पे हम पहले काम करेंगे, लेंस को ड्रॉ करेंगे. सिल्वर लेंस इट इज. देन यहाँ पे लेंस, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन एग्जाम यू आर नॉट सपोज टू ड्रॉ डायग्राम. बिना डायग्राम भी तुम कर सकते हो. मैं यहाँ पे तुम लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए आई एम ड्रॉइंग डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्ट. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ2. इसका सराउंडिंग मीडियम यहाँ पे वाटर है. इन ए लिक्विड, complete everything, there is a liquid. It's a very good question. Ray optics में, this is one of the lens के. Silver lens immersed in water. Little bit some concept है, that also I'll explain. Now ये पूछे कि ना अगले शिफ्ट के लिए आपको इतना वरी करने की जरूरत नहीं, because again this question will not get repeated. No, ये आइडिया भी रिपीट नहीं होगा. सराउंडिंग मीडियम कितना है, μ1. रेडिया इसका R1, इसका R2. यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं. Where should an object be placed so that the image should be formed at the object itself? No, this surface is silvered. No, bina, like if the silver lens is there in air, okay, we are done. Now this lens is silvered and immersed in water. What is the basic formula for this? This we have to derive. अगर आपको फॉर्मूला याद है, अगर आपका टीचर इसको पढ़ा रहे तो फॉर्मूला याद रहे तो डायरेक्टली विद हेल्प ऑफ फॉर्मूला यू कैन मैनेज, और इसको डिराइव करना पड़ता है. Now this is equal to
दिस एवरीथिंग, इसको हम स्प्लिट करेंगे. ये वाला होगा नाउ लेंस प्लस मिरर. अगर मिरर को आप लिक्विड में इंसर्ट करेंगे तो देन ऑल्सो it will be same. Its focal length will not change, but lens not like that. When surrounding medium other than air, its focal length will be different. Okay, this is the lens. Now इसका focal length FL पता नहीं. This will be FM. इसका radius of curvature कितना R2? ये वाला R2, ये हुआ mu2. Surrounding medium mu1, ये mu1. तो पहले focal length of the lens find out करेंगे. 1 by FL. It should be equal to mu of lens by mu of surrounding medium by 1 by R1 minus 1 by R2. Mu2 mu1 minus 1 R2. So 1 by effective. In दोनों को हम we are going to replace with a one mirror. इसका focal length F. इसको हम find out कर रहे हैं. Agree this? So 1 by F equal to 1 by FM minus 2 by FL. So FM का value कितना है? FM का value will be minus R by 2. So this will become minus 2 by R. Now why negative? Because it's a convex, it's like a concave mirror. Minus, this will be 2, 1 by FL. So mu2 by mu1 minus 1 by R1 plus 1 by R2. Okay, this will be R2 होगा. So 1 by F is equal to, so minus 2 बाहर आ जाता है. So R2 plus mu2 by mu1 R1 plus R2 by R1 R2. इसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है. पर बाद में like is asking for that real and inverted image is formed at the same place. Means हम इसको completely एक मिरर से रिप्लेस करेंगे ताकि जो ऑब्जेक्ट है, जो इमेज है, सो इट शुड बी देयर एट द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ. देन इसके लिए तो वेर यू हैव टू कीप इट सेंटर ऑफ कर्वेचर. देन ए वाला विल बी 2R. सो 2R डैश बोल दीजिए इसको, R बोल दीजिए. सो व्हाट इज F इक्वल टू? नाउ F इक्वल टू विल बी R by 2. F का वैल्यू विल बी R by 2. हमें यहाँ पे 1 by F पता है, डिस्टेंस पूछ रहे हैं. सो व्हाट इज आवर आंसर विल बी, एक काम करेंगे, x, what is x? X should be equal to 2R. Then we know F should be equal to R by 2. R equal to कितना? 2F. So कुल मिला के this will be 4F. F का वैल्यू हमें पता है. F will be इसको बड़ा इक्वेशन है, ऑप्शन भी उसी तरह दिया है. So we'll simplify it. Four into F will be 1 by 2 mu2 by mu1 minus 1 R1 plus R2 by R1 R2. इसको सिंपलीफाई 4 by 2 will become 2. और 2 ये वाला होगा mu1
R1 R2 whole square divided by this will be mu1 R2 mu2 minus R2 mu1. पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे. Simplification, I'll simplify it. 2 पहले डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई करेंगे. So this will be 1 by R2 mu2 minus mu1 R1 plus R2 mu1 R1 R2. इसके बाद में ये mu1 R1 R2 होल स्क्वायर mu1 R1 R2 प्लस R2 R2. इसको फर्दर एक्सपेंड करेंगे तो 2 mu1 R1 R2 होल स्क्वायर mu1 R1 R2 mu2 R1 R2 mu2 R2 square mu1 R1 R2 minus mu1 R1 R2 square. Okay, this is the answer. सिंप्लीफिकेशन लेंदी है. ऑप्शन के लिए इतना तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. कॉन्सेप्ट इज सेम. कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल. अगर सराउंडिंग मीडियम यहाँ पे एयर है तो इफ सराउंडिंग मीडियम जो भी है इफ इट दिस वाज एयर देन ये म्यू1 सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं रहता है. तो अट्रैक्टिवनेस ऑफ मीडियम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है. ओके, एग्रीड. ओनली दिस थिंग व्हिच यू हैव टू बी अलर्ट. अगला क्वेश्चन ले लेंगे. What is the dimensional formula of torsional constant? Torsional constant. So this is the where is the like a torsional oscillations. Topic name: simple harmonic motion. Tau is equal to say something like c बोलते थे, c into theta. A वाला हुआ torque. This is called like a torsional constant, and this is the angular displacement. Or torsional constant will become torque by theta. Torque, what is the torque? Torque will be force into distance. Force का dimensions m1 l1 t minus 2 और distance का l1. So m1 l square t minus 2. यहाँ पे डायमेंशन सब्स्टिट्यूट करेंगे. टॉर्क का डायमेंशन है m1 l square t minus 2. What about the dimensions of the radian? इसको dimensions 1, no dimensions. Then your answer will be m1 l square t minus 2. आपको टॉर्शनल ऑसिलेशन SHM अगर वो थोड़ा बेसिक थ्योरी याद रहे तो आई थिंक इट्स पॉसिबल. Find the time period of oscillations of the cube which is immersed in this water. इस क्यूब को now it is there in equilibrium.
सेल लेंथ एंड मास इज ऑसिलेटिंग इन वाटर, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस पूछ रहे हैं। देखो इसको हम थोड़ा इमर्स कर देंगे। I'll draw another diagram. Initially cube is floating. यहाँ पे क्यूब फ्लोट हो रहा है। Now slightly we'll press it into the liquid. इसका लेंथ कितना है? इनिशियल लेंथ इज L और Y। यहाँ पे बाय एंड फोर्स FB नॉट एंड mg, इसको हम फर्दर प्रेस करेंगे। इसका बाय एंड फोर्स कितना होगा? FB एंड mg। तो यहाँ पे वैल्यू FB नॉट, FB naught minus mg equal to 0. Initially this will be a test. Then जब आप प्रेस करेंगे, extra length x will be immersed. Okay, fine. So बाइंड फोर्स यहाँ का फॉर्मूला लिख देंगे। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड रो एल, वाटर, और डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड का डेंसिटी लेट इट बी सिग्मा। What is the bind force formula? Density of liquid volume immersed A into Y G minus mg equal to 0. जब हम प्रेस करेंगे इसको, then this will be the extra volume immersed. So due to this, the bind force will increase. The new bind force will be now FB minus mg equal to ma. What is FB? Density of liquid A y plus x g minus mg equal to ma. यहाँ पे रो एल ए वाई जी विल कैंसल विद दिस, सो बाकी बचे कितना हुआ? ए वाला कैंसल हो जाएगा ना, रो एल वाई जी with mg will cancel out. Then we have to show this rho L G A x by m. Rho L G A. What is m? M to sigma A into L. What is L? Total length of this. The equation, now A also will get cancelled. Rho L G by sigma L into x. So this will be negative sign यहाँ पे डाल देंगे SHM के लिए. So A equal to minus omega square x, इससे कंपेयर कर लो. ओमेगा का वैल्यू rho L G by sigma L. So what is the time period? Time period of oscillations is given by 2 pi by omega. So this, आप एक काम करो, आपका टीचर नोट्स ले लो। जो भी बच्चे 28, 29 शिफ्ट लिख रहे हैं ना, जाके आपका टीचर नोट्स ओपन करो। जो भी इस पेपर में हर एक क्वेश्चन आपको आपका टीचर नोट्स में मिलेगा। देन आप क्या कर रहे हो? तुम टीचर का नोट्स उधर पे के, बाकी जो भी कचरा मिल रहा है इधर इधर, वो कचरा लेके आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। दिस इज अ प्रॉब्लम। आपके टीचर नोट्स में एवरीथिंग विल बी देयर। दिस इज अ वेरी बेसिक प्रॉब्लम। ये जो पेपर टफ है ना, व्हाट इज द थिंग? ऑल बेस्ड ऑन द बेसिक्स, जस्ट बेसिक्स। जो भी आप पढ़ चुके हो, टीचर पढ़ाए तुम्हें, से लेके सर लेके ये जो क्वेश्चन सर लेके वैल्यूज, द वैल्यूज विल चेंज, बट ये तो कॉन्सेप्ट हर एक टीचर के नोट्स में रहता है। सर आप उतना टीचर को क्यों सपोर्ट दे रहे हो? ना, आई एम नॉट सपोर्टिंग, आई एम सपोर्टिंग यू ओनली। ऑलरेडी तुम पढ़ चुके हो, इसको समझ चुके हो, जस्ट ओनली द वैल्यूज चेंज ना यहाँ पे, बट ये फॉर्मूला तो यही है। जो भी 28, 29, 24 शिफ्ट लिख रहे हो, जाके आप क्वेश्चन यहाँ पे जो भी दिख रहा है उसका आइडिया आपको मिलेगा। यू डोंट गेट दिस मच ऑफ इंफॉर्मेशन, बट आपका टीचर नोट्स के में सारे के सारे रह जाएंगे। आपका टीचर नोट्स रिवाइज करो, रियली रियली यू आर गोइंग टू गेट वेरी गुड रैंक इजीली।
value substitute करना है. So on substituting this, we'll get this answer, pi by 50 seconds. This based on the atomic structure. ये तो atomic structure है, the very famous Bose atomic model. Based on that, the question is asked. So यहाँ पे what is the formula? Rn equal to n square z n square z by, okay, that's पहले करना है, topic name लिख देता हूँ. So that's based on the buoyancy, fluid statics, buoyancy, fluid statics and SHM, simple harmonic motion. Based on that, this question is there. What is the expression for radius of the nth Bose orbit? N square a naught by z. So atomic physics, Bose atomic model. So radius of the electron revolving in the ground state of hydrogen atom is a naught. Radius of electron in helium plus ion. A wala helium plus ion, z equal to 2. And electron revolving in third excited state. एक काम करेंगे हम पहले third excited state, n equal to 1 ground, n equal to 2 first, n equal to 3, and this is n equal to 4. A wala n 2 3 4. This first one will call it as ground state. N equal to 2 will become first excited state. This will be third excited. N equal to 4 will become third excited state. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इसका रेडियस पूछ रहे हैं. सर ये बीच में क्या है? दिस द न्यूक्लियस एंड इसका रेडियस पूछ रहे हैं. So what is Rn formula? N square a naught by z. N equal to 4, 4 square a naught. Helium plus ion. Helium plus ion, z will be 2. 16, this will become 8 a naught. यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या है कि a naught by a. Easy. So a naught by a, so will be 1 by 8. This is based on the simple formula. Okay, Bose atomic model, 7 8 formulas are there. अच्छा तरह थोड़ा रिवाइज कर लो, it'll be easy for you. Next, अगला question. So this is based on the electrostatics Gauss law. Electric flux is related with linear charge density lambda and surface charge density, where alpha and beta are appropriate dimension, the dimensions of beta by alpha. Charge density, linear charge density lambda sigma, इसका dimensions पूछ रहे हैं. So it's just based on units and dimensions only. So electric flux alpha lambda plus beta sigma. Electric flux का dimensions क्या है? E into S. Electric field का dimensions क्या है? Force per charge. यहाँ पे लिख देंगे dimensions. So force का m L1 T minus 2. Charge current will become charge by time. So current का charge का dimensions हुआ AT and area of cross section. This is the area. इसका dimensions हुआ L square. So electric flux का dimensions will be m L cube T minus 3 per ampere. यहाँ पे हम dimensions रख देंगे. Then यहाँ पे lambda is linear charge density. Lambda का dimensions will be charge per unit length. Charge का dimensions हुआ 80 and length का dimensions हुआ L. So इसका dimensions 80 L minus 1. Then charge density, charge by area. तो charge का dimensions हुआ 80, इसका L square. So it will be 80
L minus 2, where alpha and beta are of dimension, the dimensions of beta by alpha पूछ रहे हैं. What will be the dimensions? So the dimensions of now this should be equal to dimensions of this. So what is the dimensions of alpha? Dimensions of flux by dimensions of this. What are the dimensions of electric flux? M L cube T minus 3 A minus 1. Dimensions of linear charge density A T L minus 1. इसका सिंप्लीफाई करेंगे M L to power of 4 T to power of minus 4 A minus square. Dimensions of beta sigma. From principle of homogeneity, the dimensions of this must be equal to this, and the dimensions of this one. No, dimensions will be of beta will be dimensions of flux by charge density. Dimensions of flux, इसका dimensions क्या है? M L cube T minus 3 A minus 1 by sigma. Sigma will be A T L minus 2 M L to power of 5 T to power of minus 2 A minus 2. अब क्या पूछ रहे हैं? बीटा बाय अल्फा पूछ रहे हैं. ये तो ओनली बच गया L. L means displacement. What are the dimensions? No, dimensions of beta by L will be displacement. तो यहाँ पे तुम्हें electrostatics Gauss law इसका background चाहिए. बाद में it is related to units and dimensions. Paper is tough. Why it is tough? Because related to basics. जो भी तुम पढ़े हो वो भी याद नहीं चाहिए. The essential of JEE Mains. JEE Mains के लिए select marks नहीं आ रहे. So many will message me, sir हमें marks नहीं आ रहे. क्यों marks नहीं आ रहा है? Like concept clarity and formula. जो भी पढ़ते हो वो याद नहीं रहे तो then gone. The displacement of a particle as a function of time. Find the dimensions of. Dimensions, इसका तो dimensions कुछ भी नहीं, या तो इसका dimensions कुछ भी नहीं. The dimensions of D should be the dimensions of displacement. The dimensions of A will be L. The dimensions of B का भी L है. Dimensions of C T square should be L. So इसका dimensions हुआ T square. So dimensions of C कितना हुआ ना? L by T minus 2. Dimensions of D will be dimensions of L. Now A, B, C, D पूछ रहे. L, C का dimensions L, T minus 2. Dimensions of D will be L. So L square, T minus 2. शायद दो क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे. आई थिंक मेमोरी बेस्ड नो, पता नहीं लगे. यहाँ पे तो दो क्वेश्चंस है यूनिट्स डायमेंशंस का. आई थिंक शायद रॉन्ग कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, बट जो भी पेपर मिला है मैं डिस्कस कर रहा हूँ. अब देख रहे हैं ना, यहाँ पे दो यूनिट्स एंड डायमेंशंस का क्वेश्चन है. आई थिंक नॉट पॉसिबल है. कौन सा तो एक रहेगा यहाँ पे. इनमें जो दो थे मैं दो यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ. नो, दिस इज बेस्ड ऑन द a small point object is placed at some distance from a convex spherical surface of radius. First, found that image is formed at equal distance from P. If the distance at which object is from point P is x, then A जो है, this is the medium. This everything is medium.
एंड बाकी बचे सो outside it is area. This question is based on the ray optics, refraction at spherical surface. Chapter name ray optics, subtopic refraction at spherical surface. So यहाँ पे the ray is passing like this. और एक दूसरा डायग्राम डाल लेता हूँ. Question based on the reflection at spherical surface. Same diagram. तो बाकी जो है this everything is that medium. Then what was the question? Question यहाँ पे लेके object it will go there. Then it will form at the same distance. Then a वाला this will be the normal. इसको हम normal रखेंगे. This distance x पूछ रहे. Then this is the point P. Object, this is the image, this is the center of curvature. This will become normal. The refractive index of this is mu and this is A. Mu dash or mu A, you write it, equal to 1. This is the incident wave, this is the refracted wave. And this will also be at same distance. Then what is the formula? Mu refractive index of medium where the refracted ray is present by the distance pi minus mu of the medium in which incident ray is present by PO equal to mu minus mu A by radius of curvature PC. Formula इस तरह याद रखना है. Refractive index of a medium where refracted ray is present by image distance. Okay. Then refractive index of medium where incident ray is present by medium where refracted ray is present minus refractive index of medium where incident ray is present divided by is also based on formula. It's not a problem. ये तो basic formula है. यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1.5 a1 plus x and the direction of incident is taken positive. Incident a constant will measure from P. So जो भी distance towards right हम measure कर रहे that will become positive. Minus this will be PO, this will be minus x, this will be 1.5 minus 1. इसका radius of curvature r. So this will become 3 by 2x plus 1 by x equal to this will be 1 by 2r. Phi by equal to 1 by 2r. X equal to phi r. This is a formula, refraction at spherical surface formula. से मुझे लगे let me speak openly. बिना पढ़े, बिना हार्ड वर्क, सर मुझे रैंक चाहिए. Not possible. जो भी बच्चे लगे अब तक 4 शिफ्ट हो चुके रहते, जो भी बच्चे लगे अगर आपका मार्क्स अच्छा नहीं है मेंस में, अभी भी टाइम है. लगे जितना होता है उतना रिवीजन कर लो सेकेंड मेंस के लिए. डेफिनेटली आपका 99% हो जाएगा. 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, 100 दिन में, द मैजिक विल नॉट वर्क आउट. आपको पढ़ने से होता है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट पेपर्स, कुछ भी काम नहीं आता है. स्पेशली जेईई मेंस. जितना तुम तेरी पढ़ोगे और जितना याद रखोगे वही आपको मेंस में अच्छा रैंक दिलाएगा. पढ़ने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. आप कॉन्फिडेंस रहे तो तभी आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तभी आपको रैंक मिलेगा.
I'll take the next question. Find the distance traveled up to 30 point. Find the, in the given VT graph, velocity versus time graph, find the distance traveled up to 30.5 seconds. So yeah, this is 30.5 seconds. यहाँ पे ले लेंगे. This will be 30.5 seconds. 30.5. No need to write equation. Directly will calculate the area. ये जो area and the VT graph will give the distance covered. Okay, fine. So this distance covered, this will be A wala S1, this will be S2. Trapezium directly. So then height of the trapezium 2 by sum of parallel sides, 200 plus 400. What is S2? S2 will be area of this one, this area. So yeah, this area under this part of the graph will give distance covered for 2 seconds. Okay, fine. So iska height of the trapezium 2, height by 2 by sum of parallel sides, 200 plus 400. Then बाद में ये ले लेंगे. This will be S2. S2 का तो area of rectangle है 400 into 30.5 minus 2 will be 400 into 18.5 or 4 into 1850. This will be 600. Everything this is in meter. Huh? So the total distance covered will be S1 plus S2, 600 plus 4 5 ja 0, 4 5 ja 22, 4 8 ja 32, 32 4 to carry 4,400 plus 600. कुल मिला के this will be 5,000 मीटर. इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे. This will become 5 किलोमीटर. I think शायद wrong entry है. 5 किलोमीटर. This is based on kinematics. ये तो question kinematics. 1D. Uniform accelerated motion subtopic. अगला क्वेश्चन ले लेंगे. ये तो based on the rotational mechanics. Rotational mechanics, or you can call this as a rotational motion. Based on the subtopic name is rolling motion. असल है कि इसका कितना like what is the concept? देखेंगे, will solve the problem. Rolling motion और incline आपको याद रहेगा. Two identical ball of mass and radius है. दोनों का mass same है और दोनों का radius भी same है. Both are on the length L. Actually, if balls are rolling without sliding, then find the ratio of square of the speeds when they reach on the ground. कितना height descend होता है? This will descend an height of H1. This will descend an height of H1. Two identical ball of mass. Two identical balls of mass. So then, जब ये balls reach होते हैं ground को, then इसका velocity कितना है? V1. ये ball जब reach होता है, इसका velocity कितना? V2. In the pure rolling, work done by friction is 0. And the normal contact will act like this. The friction will act here. F1. Here normal contact. Mg sin theta 2.
here mg sin theta 1. The friction acting will be F2. Net work done by friction is 0. Then who will do work? Only the gravity. So therefore, we'll conserve the mechanical energy. So this will be mgh1 should be equal to mv1 square plus moment of inertia I omega 1 square. As it is a pure rolling, v1 equal to r omega. So mgh1 equal to mv1 square. Moment of inertia 2 by 5 mr square by 2 v1 square by r square. Simplify करेंगे पहले इसको. This will be m v1 square by 2 m v1 square by 5. तो v1 का वैल्यू कितना होगा ना? 10 g h1 by 7. देन v2 का वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे ए पे डाल देता हूँ. 10 g h2 by 7. v1 square by v2 square पूछ रहे. Then this will become h1 by h2. What is h1? यहाँ पे लिख देंगे sin 30 degree equal to h1 by l. Sin 40 degree equal to, this will become h2 by l. So h1 will become l sin 30 degree, l sin 45 degree, 1 by 2, 1 by root 2. 1 by root 2. This will be your answer. Rolling on inclined plane, अगर आपको फॉर्मूला से याद रहे तो still more easier, very easily आप you can bring the answer. यहाँ पे मैं omega 1 beta. What is the basic concept? This is a concept. Net work done by friction is 0. Therefore, only gravity does work. That's why we are applying this conservation of mechanical energy. किसी एक डायग्राम में आप इक्वेशन से डिराइव कर लो. बाद में सेकेंड डायग्राम में only you have to replace h2 because the speed v1 depends on the h1. v1 depends on h1. So therefore v2 depends on h2. दो बार करने का जरूरत नहीं दिस फॉर्मूला. जो भी फॉर्मूला डिराइव करते हो उसी को मॉडिफाई कर दो सेकंड डायग्राम के लिए. तो अगला क्वेश्चन ले लेंगे. Then here this question is, hot water moves faster than cold water. पहले statement 1 will delete. Hot water, what is the density of hot water? The density of hot water will be less than that of cold water. So जब density कम है, then definitely what will happen? It will have the more momentum, because momentum what happen will write mass into velocity. Mass will become density into volume, and this is as usual velocity. Because of less density, then definitely the velocity should be, the volume should be more, and it will have more speed. And this is one basic idea. Or the energy kinetic energy per unit volume, the kinetic energy per unit volume equal to rho v square by 2. The kinetic energy will be constant. Then as you decrease the density, then the speed has to increase. Just based on the theoretical things, no need to bother anything in depth. So statement 1 is true. Soap water have higher surface than fresh water. No, the surface tension of soap water will be less than that of fresh water. I think this is a theoretical information. This is a wrong statement. This is a correct statement. We'll pick up option 3. It's based on the surface tension. What is the concept? The concept involved is surface tension chapter. Surface tension of when you add detergent
surface tension will decrease. So soap water, what happens is, because when we add detergent to water, they'll become soap water. Surface tension will decrease. Fresh water means normal water. This problem based on the work done chapter. Work, energy, power. If force is acting on a particle along line y equal for displacement from 0 to b equal. So what is the basic formula? Work done equal to F bar dot dr bar. You are moving from 0 to 4, 4, that too along the path. पहले इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x square y square I y square j cap dot dx y cap 0, 0, 4, 4. Expansion, this will be x square y square dx plus y square dy. What is the path? Along the path y equal to x. So जहाँ पे भी path, what is the path? Y equal to x. So dy equal to dx. So भी replace करेंगे. X square y square will be x square dx. जहाँ पे भी y square है उसको हम x square बना देंगे. dy will become dx. This will become 0 to 4. Further यहाँ पे simplify करेंगे. X to power of 4 dx 0 to 4. 0 to 4 x square dx. X to power of 5 by 5 0 to 4 x cube by 3 0 to 4. 4 to power of 5 by 5 4 to power of 3 by 3. Okay, total. This will be your answer. Simplified. Now purely some basic concept. Work done by variable force is given by this particular formula. The path is very important because of this y equal to along the line. Work done acting on particle along the line for displacement. This one. We are moving along one specific path. Just that's why जहाँ पे भी y है y को x से x में रिप्लेस करो, dy को भी dx में रिप्लेस करो, बाद में सॉल्व करके लिमिट रख दो, then we'll get the required answer. This will be your answer. Next question. Match the column. ये तो basic thermodynamics question है. When volume change is zero, what process it is? Isochoric process. When pressure is constant, isobaric. When no heat exchange, it will be adiabatic. When work done by gas is equal to heat given, it will be isothermal. Definitions, thermodynamics का definitions. When volume change, when no volume change, इसको तो हम isochoric बोलते हैं ना. When pressure constant, ये तो isobaric process हुआ. When no heat is exchanged, no heat exchange also, this will be adiabatic. Then work done by the gas is equal to heat given to the gas. This will be isothermal. I think this option will match. यहाँ पे कॉन्सेप्ट कुछ एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है, जस्ट बेसिक थियरी ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स. The topic is based on the thermodynamics. Okay, fine. For thermodynamics, the basic definition: isothermal temp, like a no change in temperature, like a then delta U will be 0, Q equal to W. Then isochoric process, volume constant, work done 0. Isobaric process, pressure constant. Then next, no heat exchange, adiabatic process. Next, if angle of projection for two projectiles are 30, then the ratio of velocities at maximum height. यहाँ पे हम दो प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट कर रहे हैं. इसका वेलोसिटी u1 थीटा 1, दूसरा वाला प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसका वेलोसिटी u2 थीटा 2 एट हाईएस्ट पॉइंट. इसका वेलोसिटी u1 cos थीटा 1, इसका वेलोसिटी u2 cos थीटा 2.
Assume initial velocity of both the projectiles is same. Then the ratio of velocities at highest point का velocity ratio पूछ रहा है. U1 cos theta 1, U2 cos theta. इसका sum ratio. U1 equal to U2. So therefore cos theta 1 equal to cos theta 2. Cos theta 1 root 3 by 2. Theta 1 30 degrees. Theta 2 60 degrees. 1 by 2. So this will be root 3. Based on what? Projectile motion. Kinematics 2D. Next. Two particles are located at equal distance from origin. The position vectors of those are represented by. If both the vectors are at right angle to each other, the value of n. What is the condition for right angle? Dot product should be 0. 2i cap plus 3n j cap plus 2k cap dot 2i cap 2j cap 4p k cap equal to 0. I dot I1 4. J dot I think everyone knows vector algebra. I dot I1, then I dot j 0, I dot k 0. बाद में j dot I 0, j dot j 1. j dot j 1 means यहाँ पे कितना लिखेंगे हम 6n. फिर बाद में j dot k will be 0. This is p. Then k dot I 0, k dot j 0, k dot k ये 1 होगा. So this will become 8p. But यहाँ पे n value पूछ रहे हैं, one value of 1 by n. But हमें p value पता नहीं. But he is telling something. Located at equal distance means magnitude of a equal to magnitude of b. There is a condition given. इसका magnitude कितना है? 2 square 9n square plus 2 square. Magnitudes. Sir, on what basis of magnitude equal ले रहे हैं? They are at equal distance. Distance means magnitude of it. Position vector. Magnitude of position vector is nothing but will become distance. So इसका 2 square plus 2 square plus 16p square. So this will be 8 plus 9n square. This will be 8 plus 16p square. 8 cancel होगा. So n square p square will be 9n square by 16. 3n by 4. P value. P will be 3n by 4. 4 plus 6n, 8. 3n by 4. 4 plus 6n plus 6n. 12n plus 4 equal 0. N equal to minus 1 by 3. My 1 by n पूछ रहे. 1 by n will be minus 3. Magnitude. N can be positive or negative. Okay, this one. So this is about the 23rd shift, morning shift. I think really asked about the basic fundamentals. So paper क्यों tough है बोले तो just asked about the basic fundamentals. तो concept जो भी तुम पढ़ते हो वो clarity बाद में याद रखना पड़ेगा. Then you can manage. So for all the next 24, 28, 29, you have a time. जितना होता है उतना topics revise कर लो. It will really help you. अब तक जो भी पूछ रहे like JEE means all about the basic fundamentals only. एक दो क्वेश्चन है very tough but there will be no use. वो आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना, ग्रैंड टेस्ट लिखना, मॉक टेस्ट लिखना, नो नॉट जरूरी नहीं है. यहाँ पे आपका टीचर नोट्स है, जाके ओपन करो, जितना होता है उतना रिवाइज कर लो, राइट एग्जाम, शूट शॉट, यू आर गोइंग टू गेट वेरी गुड रैंक. Okay, thank you everyone for your great support.
All the best, all the students who are writing 24, 28, 29. So all the best, and by evening only, because I'll work in college, so not possible for me to upload the paper immediately. So then the 24th by evening only I'll upload the paper, and the 28th, 29 also, for great support. And those who have successfully completed JEE Mains, उन लोगों के लिए we have lot of advanced content हमारे YouTube channel में, ऐप में, web में. जितना होता है उतना आप use कर सकते हैं. It's totally free. Maximum utilize it and try to get a better examination skills, knowledge gain कर लो, ताकि आप एग्जाम में अच्छी तरह मार्क्स स्कोर कर सकते हो. All the best, students. Thank you. Thank you. Okay, bacho, this was the 23 January shift 1. So the paper is tough and lengthy. It's not that something it was paper easy tha. Okay, no, it's tough, but it's based on basic fundamentals. जिसका basic fundamental strong है, जो अपने टीचर का notes revise कर रहे हो, I think those students, they will revise this paper, they'll feel easy. Those students बिना revision के जस्ट रैंडम प्रॉब्लम ओए सॉल्व करना और बिना फॉर्मूला, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहे तो देन डेफिनेटली दिस पेपर इज टफ एंड लेंथी. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जितना आप आपका नोट्स पढ़ोगे, दैट इज एडवांटेज. यू आर इन एडवांटेज पोजिशन. तो स्टॉप गिविंग मॉक टेस्ट, स्टॉप सॉल्विंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, रीड ओनली योर द बेसिक कंटेंट. जो भी पूछ रहे हैं अब तक जेईई मेंस में, बेसिक फंडामेंटल्स you can manage it. So no need to give priority to the something special. Stick on to the basics. Okay, thank you all of you. Thank you for great support. All the best.